Assalamu alaikum students and welcome back. I hope you all are doing great. The topic that we are going to understand and cover in this lecture is simultaneous linear equations. Now, what are simultaneous linear equations? What are the methods of solving simultaneous linear equations and what are the applications of simultaneous linear equations? In this video, we will cover each and every topic in detail. So, follow the chapters in this video and by the end of this video, I am sure you will be able to handle this topic very easily. Now, let's begin with the very first topic, and that is what are simultaneous linear equations. So, what are simultaneous linear equations? Now, in the topic of linear equation, we studied that an equation of a straight line is y is equals to mx plus c. Now, it has two variables y and x. So, whenever we have an equation that has two variables y and x, we call that equation of a straight line or a linear equation, right? Now, this linear equation will give us a straight line on this Cartesian plane. So, if we have another linear equation and we plot that line also on the same Cartesian plane, which means एक ही Cartesian plane पे दोनों equations की lines को plot किया जाए, we call that simultaneous linear equations. So, if we have one equation, we call it linear equation. When we have multiple equations, let's say two equations, we call it simultaneous linear equations. Now, whenever we have two linear equations and we plot them on the same Cartesian plane, what will happen? Let's say this is our first equation और उसकी straight line हमारे पास ऐसे आई है. Another equation, उसकी straight line हमारे पास लेट्स से इस तरह से आई है, राइट? सो इस ग्राफ पे आप अब ये चेक करें कि ये दोनों लाइंस कहाँ मीट करती हैं, कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं. यू विल फाइंड आउट दैट देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑन द इंटायर कार्टेशियन प्लेन जहाँ ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या मीट करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं. अदर देन दिस पॉइंट आप कहीं पर भी अगर देखें तो डिस्टेंस इनके बीच में बढ़ता जाएगा. इट विल क्रिएट, दे विल बी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. जितना दूर जाते जाएंगे डिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा. सो दिस इज द ओनली पॉइंट ऑन ग्राफ दैट इज लेट्स से 3 and this is the value of x and this is the value of y. Now this point is called solution to simultaneous linear equation. So whenever we have two linear equations and we are asked to solve these equations, that would mean कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि on a Cartesian plane ये दोनों लाइंस कहाँ पर मीट करती हैं, कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं. That is called solution to simultaneous linear equation because ये वही point है, this is the only point where x की value and y की value is same on both the equation and we call it that this point, the value of x and y satisfy both the equations. Now, for example, अगर मेरे पास दो equations हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसा point होगा जहां पर वो एक दूसरे से कट करेंगे, राइट? उस पॉइंट की एक x कोऑर्डिनेट होगा एंड वी विल हैव अ y कोऑर्डिनेट. ये दोनों इक्वेशंस के लिए सेम होगा. फॉर एग्जांपल जो x की वैल्यू आ रही है उसी पे y की वैल्यू आ रही है. सो जब मैं इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करूंगा 3, आई विल गेट 3.5 in first equation. Again, if I put this value in equation number 2, x is equals to 3, I will get the same value 3.5 for the value of y, right? So this is called solution. अब इसके अलावा पूरे ग्राफ में there is no other point जहाँ पे ये दोनों की values x और y same आ जाए. For example, let's say this one. मैं अगर x को 2 सेलेक्ट करता हूँ तो अब आप देखो इक्वेशन नंबर 1 में एक इक्वेशन के लिए y की वैल्यू ये आ रही है एंड फॉर द सेम वैल्यू ऑफ x y की वैल्यू कुछ और आ रही है, राइट? टू इक्वेशंस के लिए x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं, बट दिस इज द ओनली पॉइंट जहां x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू दोनों ही लाइंस के लिए सेम है. सॉल्यूशन टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, दैट इज x is equals to 3 and y is equals to 3.5. Now, what are the methods of solving simultaneous linear equation? So if we have two linear equations and we are asked to solve that,
That means we are asked to find the solution to the simultaneous linear equation, the point where they meet each other. We have three methods for that. Now, sorry, not two, three methods. Method number one, and the most popular method, is called elimination method. Method number two is substitution, and the last is called graphical method, that is this one. We have to plot the graphs of both the linear equations on the same graph, and we have to see where they will meet each other. Now, we will discuss each method in detail in the next lectures to come. So, follow the lectures in the video. If you want to skip let's say elimination को skip करना चाहते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के चैप्टर पे जा सकते हैं. बट आई वुड रिकमेंड कि आप इस पूरे लेक्चर को कंप्लीटली पूरे लेक्चर को देखें, सो दैट आपको सारे मेथड्स एलिमिनेशन, substitution and graphical method are clear, right? And applications will be in the last, so applications को जरूर solve करना है. Now let's talk about what is an elimination method. Elimination method से simultaneous linear equations को किस तरह solve किया जाता है. Let's see this topic in detail. The most commonly used method for solving simultaneous linear equations is elimination method. As the name suggests, we have to eliminate. Now, before I tell you what do we have to eliminate, just understand this thing. Suppose we have a number 2 and we want to eliminate this number, that is we want to make this number 0. So हम क्या करेंगे? Obviously 2 में से -2 कर देंगे and we will get 0, right? Simply 2 में से अगर -2 कर दिया जाए तो we get 0. 2 eliminate हो गया, right? यही procedure elimination method में follow किया जाता है. Because these are the equations of straight line, we have two variables x and y, right? So हमें किसी एक variable को either x और y, किसी भी एक variable को eliminate करना होता है so that we can find out the value of other variable. Now जैसे ही हम दूसरे variable की value find out कर लेते हैं, उसके बाद हम substitution करके फर्स्ट वेरिएबल को जिसको हमने एलिमिनेट किया था उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है. सो एलिमिनेशन मेथड के कितने सिनेरियोज हो सकते हैं? वी हैव 6 डिफरेंट सिनेरियोज. आप जब भी एलिमिनेशन मेथड को यूज कर रहे होंगे फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यू विल फाइंड योरसेल्फ सॉल्विंग ईदर ऑफ द 6 सिनेरियोज. वो 6 सिनेरियोज कौन से हैं? वी विल स्टडी देम इन डिटेल वन बाय वन. सो this is the first scenario. Now elimination method है, so we have to either eliminate x or we have to eliminate y. किसी एक unknown को, किसी एक variable को हमें eliminate करना है. होगा किस तरह? It is very simple. जैसे हम क्लास 1-2 में 2 + 2 करते थे, similarly उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी एडिशन करनी है इन दोनों equations की. Let's say this is equation number 1 and this is equation number 2. Now, as you can see, plus y minus y are automatically cancelling out each other. आपको कोई effort नहीं करनी. Plus y cancels out minus y. ये ऐसे ही है 1 minus y. 1 minus 1 is 0, right? So, plus y and minus y cancels out each other. We are left with only one variable and that is x. 4x plus x is 5x. Simple addition and subtraction है. Plus y minus y eliminate हो गया, एक दूसरे को कट कर गए. 4x plus 1x is 5x and this is 22 plus 3 is 25. So what do we get? 5x is equals to 25. Now in order to find out the value of x, we have to shift the 5 on the other side of equals to. X is equals to 25 upon 5 because 5x के साथ multiply हो रहा है, equals to के दूसरी तरफ जाएगा तो divide होगा. 5 1 times is 5, 5 times is 25. x is equals to 5. So the moment हम एक variable को eliminate कर देते हैं, we get the value of the other variable. X is equals to 5. Now what I can do is I can use this 5, I can substitute this value of x equals to 5 in equation number 1 और equation number 2. ये मेरी choice है. मैं जिस भी equation में इसको put कर दूं, y की value automatically आ जाएगी. Let's see. मैं इस case में in the first scenario मैं दोनों ही इक्वेशन में पुट करके आपको दिखाऊंगा so that you are confident कि आंसर में कोई चेंज नहीं होता.
इन द नेक्स्ट सिनेरियोज, नेक्स्ट 5 सिनेरियोज मैं किसी एक में ही पुट करूंगा ताकि आपको वैल्यू मिल सके। x इज इक्वल टू 5, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग x is equals to 5 in equation 1, 4x plus y is equals to 22. Instead of x, I am going to substitute the value 5. So 4 x की जगह आ गया 5 plus y equals to 22. 4 5 times is 20 plus y is equals to 22. So y is equals to 22. 20 goes to the other side, minus 20. We get y is equals to 2. See, एलिमिनेशन की एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, अननोन x की वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ y। इसी को इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करके देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2, x minus y is equals to 3. So instead of x, we are going to write 5 minus y is equals to 3. 5 goes on the other side, minus y is equals to 3 minus 5. Because यहाँ पे 5 पॉजिटिव था, वहाँ जाके नेगेटिव हो गया। Minus y is equals to minus 2. Minus cancels out minus and we get y is equals to 2. Y is equals to 2, y is equals to 2. So be very confident in any equation. If you put the value of x, you will get the same value for y. It is your choice. आपकी मर्जी है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। I hope scenario number 1 is now clear to you. In this scenario, कोई एक वेरिएबल इधर x और y ऑटोमेटिकली सेल्फ एलिमिनेट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। जस्ट प्लस y माइनस y है, कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली 2y minus 2y automatically cancel हो जाएगा, 3y minus 3y will automatically cancel out. This is the first scenario where one variable eliminates itself on its own. I hope it is clear. Now this is scenario number 2. In this case होगा क्या, 3x plus 1x is 4x, तो x तो eliminate नहीं हो रहा, plus y and plus y, which means 1y plus 1y is 2y. Now eliminate तो हुआ नहीं, ना x eliminate हुआ ना y eliminate हुआ, because elimination के लिए एक वेरिएबल हमें जो चूज करना है, लेट्स से y हम इधर चूज करते हैं, तो एक y को पॉजिटिव में होना है और एक y को नेगेटिव में होना है, राइट? और उनकी नंबर्स, उनकी जो वैल्यूज हैं, जो डिजिट्स हैं, वो भी सेम होने चाहिए हैं। बिकॉज अगर 3y को मुझे एलिमिनेट करना है तो मुझे -3y चाहिए है, अगर मुझे 1y को एलिमिनेट करना है तो मुझे -1y ही चाहिए है, राइट? सो अब यहाँ पे ना एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। लेट्स से आई मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 1, 3 1 इज गेटिंग 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 4, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 5. Whenever I multiply any number by 1, we are getting the same value, right? So 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो वी गेट 3, 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो वी गॉट 5. वैल्यू चेंज नहीं होती whenever we multiply anything by 1. Second, if I have to change the sign, तो ये याद रखें कि we have to multiply that number with minus, because minus की क्या प्रॉपर्टी है इसको देखें। अगर मैं एक पॉजिटिव का साइन लूँ और उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ माइनस से, तो पॉजिटिव का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। सिमिलरली अगर मैं माइनस को ही माइनस से मल्टीप्लाई करूं, व्हाट डू आई गेट, माइनस माइनस प्लस। सो माइनस साइन की ये प्रॉपर्टी है, व्हेनेवर इट इज मल्टीप्लाइड विथ एनी अदर साइन इट चेंजेस इट। प्लस माइनस माइनस बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया। सो हमें जब भी व्हेनेवर वी हैव टू change the sign of any number, what we do is we multiply that number with minus. अच्छा, अब माइनस ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? सो अगर हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 को -2 करना है और मुझे वैल्यू चेंज नहीं करनी है, तो मैं क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो इधर क्या हमने करना है, लेट्स सी, दिस इज पॉजिटिव y, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव y। मुझे किसी
एक नंबर को, किसी एक वेरिएबल को ऊपर वाले में या नीचे वाले में मुझे इसको माइनस में करना है ताकि कैंसिल आउट हो जाए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ -1. सो माइनस क्या करेगा, इस पूरी इक्वेशन के साइन को चेंज कर देगा. जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा और जहां जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा. बट आई हैव टू ऑल्सो इंश्योर कि ये y है तो ये भी y ही रहे, ये 2y या 3y ना हो जाए. सो आई मल्टीप्लाई इट विथ 1 ताकि कोई भी वैल्यू चेंज ना हो. 1 से मल्टीप्लाई करने पे एज वी सॉ वैल्यू चेंज नहीं होती. सो द इक्वेशन नंबर 1 रिमेन्स द सेम, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5. इक्वेशन नंबर 2 में सारे साइन चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ माइनस. सो दिस बिकम्स -x, दिस बिकम्स -y एंड दिस बिकम्स -3. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. मल्टीप्लाई बाय 1 किया था सो वैल्यूज चेंज नहीं हुई. माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो साइंस ऑल ऑफ देम चेंज्ड. नाउ प्लस y माइनस y एलिमिनेट हो गया y. 3x में से 1x माइनस किया, वी गेट 2x इज इक्वल्स टू 2. So 2x is equals to 2, x is equals to 2 divided by 2, that is equals to x is equals to 1. Now substituting this value of x in any equation 1, 2 or 3, किसी भी equation में आप substitute कर सकते हैं. Let's say I'll choose equation number 2. Substituting x is equals to 1 in equation 2, x plus y is equals to 3. x की जगह 1 plus y is equals to 3. Now 1 goes on the other side, y is equals to 3 minus 1, y is equals to 2. We get the value of y. So this is scenario number 2 where you just have to multiply any one equation with -1 so that sign change हो जाए लेकिन numbers change ना हो, values change ना हो. I hope scenario number 2 is now clear to you. Now this is our scenario number 3. Scenario number 3 में क्या होता है, we have let's say 14x plus 6x that is 20x. तो x तो eliminate नहीं हो रहा. 8y minus 4y is 4y. 8y में से 4y minus किया, we are left with 4y. तो यहाँ तो y भी eliminate नहीं हुआ. But we can clearly see कि अगर हम इस 4 को 8 बना लें, किसी तरीके से इसको 8 कर दें तो 8y पॉजिटिव 8y माइनस 8y विल कैंसिल आउट ईच अदर. उसके लिए क्या करना है, ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है. किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो हम पहली इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को वी विल मल्टीप्लाई इट विद 2 बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन विद 2. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ -4y को 2 से मल्टीप्लाई करें. जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी. what do we get, 14 2 is 28x minus 4 2 is 8y is equals to 34 into 2 is 68. This is equation number 3. Okay, remember मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय -2 नहीं किया. राइट क्यों, बिकॉज माइनस का साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता. पूरी इक्वेशन के साइन भी चेंज हो जाते. अगर ये प्लस 8y हो जाता तो 8y और 8y तो 16y हो जाता ना. अगेन एलिमिनेशन तो नहीं होती. सो जब भी हमें ऐसे केस में जहां हमें ऑलरेडी साइन ऑपोजिट साइंस हो और हमें एलिमिनेशन करनी है तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ किसी डिजिट से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है. दैट्स इट. नाउ this equation is as it is, 6x plus 8y is equals to 34. Minus 8y plus 8y cancels out each other. 28 plus 6 is 34x is equals to 8, 9, 10, 11, 12, 2, 6, 7, 8, 9, 102. 34x is equals to 102. So 34x is equals to 102. X is equals to 102 divided by 34. X is equals to 3. Now we can substitute this value of x in 1, 2 or 3 in any equation we choose. Substituting x is equals to 3 in equation, I'll choose equation number
1. Equation number 2 actually, because it looks easy. 6x plus 8y is equals to 34. Now 6, and instead of x, 3. In place of x we are going to write 3 plus 8y is equals to 34. 6 3 is 18 plus 8y is equals to 34. Now 8y is equals to 34. 18 को equals to के दूसरे हैंड पर लेकर जाएंगे, minus 18. 8y is equals to 16, and y is equals to 16 divided by 8, and y is equals to 2. I hope scenario number 3 is clear. In this scenario, what we have to do is हमें किसी एक equation को किसी एक number से multiply करना है, and that's it. Just like in this case, हमने equation number 1 को जब 2 से multiply किया तो minus 4 into 2 is minus 8y. 4y 8y बन गया, minus 8y and plus 8y cancels out each other and y eliminate हो गया, right? Now you have to ensure कि यहाँ पर हमें सिर्फ एक number से multiply करना होता है. This is scenario number 3. I hope it is clear. Now this is the fourth scenario. Again, let's select y. Let's say we have to eliminate y in this case. क्योंकि 7x plus 2x तो वैसे ही 9x हो रहा है, तो ये तो eliminate हो नहीं रहा ना. Minus 3y and minus 1y, that is minus 4y. Again, ये भी eliminate नहीं हुआ. But let's say we select y, हमें y को eliminate करना है, तो अब क्या करें? Let's say this is equation number 1 and this is equation number 2. This is 3y. अगर ये भी 3 हो जाए तो पॉसिबल है कि ये एलिमिनेट हो सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं. उससे होगा क्या? 2 3 इज 6x, 3 1 इज 3y. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ भी माइनस 3y है, यहाँ भी माइनस 3y हो जाएगा. अगेन माइनस 3y और माइनस 3y विल बिकम माइनस 6y. ये एलिमिनेट नहीं होंगे. सो एज वी स्टडीड इन सिनेरियो नंबर 2 कि हमें अगर साइन चेंज करना है तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है. सो 3 के साथ साथ मैं माइनस भी यूज करूंगा, सो दैट माइनस 3 से जब हम मल्टीप्लाई करें तो पूरी की पूरी इक्वेशन के नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे, वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऑल्सो उसके साइन भी चेंज हो जाएंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन रिमेन्स एज इट इज, 7x minus 3y is equals to 13, and plus minus minus 2 3 is 6x, minus minus plus 3y, plus minus minus 3 3 is 9. This is our equation number 3. See, 3 से मल्टीप्लाई करने से प्लस 3y हो गया, बट माइनस 3y हो गया, और माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करने से सारी की सारी इक्वेशन के साइन चेंज हो गए. यही हमने पढ़ा था कि माइनस की प्रॉपर्टी होती है. नाउ माइनस 3y प्लस 3y cancels out each other, y eliminate हो गया, 7x minus 6x is 1x, and 13 minus 9 is 4. So x की वैल्यू आ गई, x is equals to 4. Now we can substitute this value x is equals to 4 in equation number 1, 2, 3. It is our choice. I'll use equation number 2. 2x minus y is equals to 3. 2, and in place of x I'm going to write 4 minus y is equals to 3. 4 2 is 8 minus y is equals to 3. Minus y is equals to 8 goes on the other side of equals to 3 minus 8 minus y is equals to minus 5. Minus cancels out minus, y is equals to 5. So scenario number 3 and scenario number 4 में क्या difference है? It is just that कि scenario number 3 में you just have to multiply the equation with a number, but in scenario number 4 you have to multiply the equation with a number, and that number should be a negative number because माइनस के साइन से ये वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज ये वैल्यू चेंज नहीं होगी. और अगर ये वैल्यू साइन चेंज होगा, अगर ये साइन चेंज नहीं होगा तो एलिमिनेशन नहीं होगी, बिकॉज एलिमिनेशन के लिए एक वेरिएबल को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव में होना चाहिए है.
यहाँ दोनों ही नेगेटिव में है, तो किसी एक को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप सिनेरियो नंबर 4 इज नाउ क्लियर टू यू। Now this is scenario number 5 and perhaps a very important scenario. In this case, as we can see, 4x plus 6x becomes 10x, eliminate नहीं हो रहा। 5y minus 3y is 2y, again eliminate नहीं हो रहा। So the first thing that comes to our mind is कि भाई इस 3 को किसी तरीके से 5 बना दें, which means कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें 3 को, so that we get 5। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं 3 को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 लेट्स से 2 से भी मल्टीप्लाई करूं, 3 2 इज 6, 3 1 टाइम्स इज 3, 3 2 टाइम्स इज 6, वो फिर भी 5 नहीं आया, विच मीन्स कि मुझे किसी डेसिमल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेट्स से 1.67, 1.82, 1.45, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो इस तरह की सिचुएशन में हमने क्या करना है, वी हैव टू फॉलो वन स्ट्रैटेजी एंड दैट इज, let's say this is equation number 1 and this is equation number 2। so हमने जो strategy यूज करनी है that is equation number 1 को, पूरी की पूरी equation को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले y की वैल्यू से, मल्टीप्लाई बाय 5, एंड इक्वेशन नंबर 2 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। सो इससे होगा क्या, 3 5 टाइम्स इज 15, 5 3 times is 15। Rather than using a decimal number to multiply equation 1, हमने क्या करना है, equation 1 को नीचे वाली y की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर वाली y की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, so that we get 15y। Now plus 4 5 is 20x minus 3 5 is 15y is equals to 25 into 5 is 125. This becomes equation number 3. Similarly, 6 3 is 18x plus 5 3 is 15y is equals to 9 3 is 9 18 27. Minus 15y plus 15y cancel out each other, eliminate हो गया y, 20y plus 18 is 30, 20x plus 18x is 38x is equals to 7 8 9 10 11 12 2 4 5 152। so 38x is equals to 152, x is equals to 152 divided by 38, x is equals to 4। now we can substitute the value of x in equation number 1 2 3 or equation number 4। इट इज आवर चॉइस, हम किस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू चूज इक्वेशन नंबर 2, सब्सटीट्यूटिंग x is equals to 4 in equation 2, 6x plus 5y is equals to 9। now 6 in place of x I am going to write 4 plus 5y is equals to 9, 6 12 18 24 plus 5y is equals to 9, 5y is equals to 9 minus 24, 5y is equals to minus 15। now y is equals to minus 15 divided by 5, y is equals to minus 5 3 times this। I hope this scenario is now clear to you। In this scenario, हमें किसी decimal से multiply करने की बजाय what we have to do is we have to multiply equation number 1 with the value of y in equation number 2 and the equation number 2 with the value of y in equation number 1। I hope it is clear। now this is the last scenario number 6 that you can find yourself solving। now in this scenario होता क्या है, let's say 5x plus 3x is 8x, so x तो eliminate नहीं हो रहा, 4y plus 5y again it is 9y, so y भी eliminate नहीं हो रहा। so what do we do is the first thing that comes to our mind is कि यार ये 4 को हम किसी तरीके से 5 कर लें, so किसी नंबर से ऐसे से मल्टीप्लाई करें कि ये 4 जो है वो 5 बन जाए।
अगर मैं किसी भी नंबर से 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, एक होल नंबर से 2, 3, 4 या किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, 4 2 इज 8, 4 3 इज 12, 5 तो वो नहीं बन रहा. सो द सेकेंड थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज किसी डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कर लें. डेसिमल नंबर से या डेसिमल से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, वो डेसिमल कहाँ से मिलेगा. नाउ व्हाट डू वी डू इन दिस केस इज अगेन similar to scenario number 5. Let's say this is equation number 1 and this is equation number 2. Equation number 1 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड इक्वेशन नंबर 2 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 4. बट प्रॉब्लम इज कि इससे भी हमारा y एलिमिनेट नहीं होगा बिकॉज 4 5 इज 20y, 5 4 इज 20y. बट द प्रॉब्लम इज दोनों प्लस में है, दोनों ही पॉजिटिव है. सो 20y प्लस 20y तो 40y बन जाएगा, इट विल नॉट एलिमिनेट. उसके लिए हमें क्या पता है कि हमें किसी भी एक वैल्यू को, किसी भी एक इक्वेशन को rather than let's say +4 मैं इसको -4 से मल्टीप्लाई करता हूं बिकॉज दिस माइनस विल चेंज द साइन ऑफ ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. 3x 5y और 4 इन तीनों की वैल्यूज के साइंस चेंज हो जाएंगे अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट. सो सिनेरियो नंबर 6 में हमें इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 की y की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है एंड इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 की y की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. एंड किसी भी एक को, नॉट नेसेसरी कि आप इसको ही मल्टीप्लाई करें -4 से, रादर यू कैन यूज माइनस हेयर एज वेल. किसी भी एक इक्वेशन को हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है सो दैट उसके साइन भी चेंज हो जाए. नाउ 5 5 इज 25x plus 5 4s are 20y is equals to 5 into 11 is 55. This is equation number 3. And equation number 4, next equation will be 3 4 is 12x, but plus minus minus हो गया, plus minus minus हो गया, 5 4 is 20y is equals to plus minus minus 4 4 is 16. This is equation number 4. Now plus 20y minus 20y cancels out each other, y eliminate हो गया, 25 minus 13 is 12 is 13x is equals to 39. Yes, 39. So 13x is equals to 39 and x is equals to 39 divided by 13, x is equals to 3. Now we can substitute this value of x in equation number 1, 2, 3 or 4, whichever equation we choose. It is up to us. Substituting x is equals to 3 in equation, I'll choose equation number 2. 3x plus 5y is equals to 4. Now x की जगह x की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4. 3 3 इज 9 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4. 9 को हम इक्वल्स टू के दूसरे एंड पे लेके चले जाएंगे. 5y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 9. 5y इज इक्वल्स टू माइनस 5. नाउ y इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 5 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 5 1 5 1. So the value of y is minus 1. This is called solution to simultaneous linear equation. X is equals to 3 and y is equals to minus 1. Now, in this case, in this scenario, remember we just do not have to multiply equation number with the value of y in equation number 2 and equation number 2 with the value of y in equation number 1. We also have to use minus with one of them. किसी एक के साथ भी we have to use minus as well so that सिर्फ वैल्यू चेंज ना हो, उसका साइन भी चेंज हो. I hope these 6 scenarios are now clear to you. So these were the 6 different scenarios that we can find ourselves in. Now let's look into the situations, the variations of the questions that we can get, the way they're going to change the questions for us. Now, for example, this question. In this question, the only change is that
instead of x and y, they have used a and b. Now, equation of straight line में there are two unknown variables. It is not compulsory कि वो x और y ही हो. It can be ab, it can be pq, it can be st, it can be any two variables, right? So इस तरह की सिचुएशन में we don't have to get confused. हमें confused बिल्कुल भी नहीं होना. Procedure वही follow होगा. This is equation number 1 and this is equation number 2. We have to eliminate one unknown variable. In this case, as you can see, minus 2b plus 2b, automatically they are getting cancelled out. ये scenario number 1 था जिसमें खुद एक variable self eliminate हो जाता है, right? Now 5a plus 3b is 5a plus 3a is 8a is equals to 9 plus 7 is 16. So 8a is equals to 16. A is equals to 16 divided by 8. A is equals to 2. 8 ones are 8, 8 2 is 16. Now we can use this value to and substitute this value in any of this equation 1 or 2, and we can get the answer for B. Let's say substituting A is equals to 2 in equation 1. So 5a minus 2b is equals to 9. 5, instead of a I am going to write 2, the value of a, minus 2b. 10 minus 2b is equals to 9. Minus 2b is equals to 9 minus 10. Minus 2b is equals to minus 1. Minus cancels out minus, b is equals to 1 upon 2. So it is not necessary कि आपको हर बार x और y ही मिलेगा. You can get ab, pq, rs, st, uv, any two variables. The condition only is कि आपके variables दोनों ही equation में same होने चाहिए. अगर इधर ab है तो इसमें भी ab ही use हो रहा है, right? So इसमें कभी भी confuse नहीं होना कि x, y क्यों नहीं है, right? Now let's look into the other situation or the other variation जो कि हमें मिल सकती है. Now this is another situation. होता क्या है कि हम हमेशा ये माइंड में रखते हैं x, y equals to constant. पहले x आता है, फिर y आता है और फिर constant आता है. भाई it is not compulsory. ये कोई hard and fast rule नहीं है. Straight line की equation में there are two unknown variables. वो कोई भी हो सकते हैं और वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं. ये कहीं पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं पे ये फिक्स नहीं है कि पहले x आएगा देन y आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. सो इन दिस केस अगर हमें इस तरह की इक्वेशंस मिल जाएं, वी डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज. हमें अपना प्रोसीजर ही फॉलो करना है एंड दैट इज एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है. लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इन दिस केस एज वी कैन सी minus 2x and minus 2x कैंसिल आउट नहीं होंगे. सो वी हैव टू इंश्योर कि कोई इनमें से एक प्लस में आ जाए. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज -1 से किसी एक इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 2 को वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. सो इक्वेशन 1 रिमेन्स द सेम, दैट इज 3y minus 2x is equals to 9. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस बिकम्स minus 2y plus 2x is equals to minus 7 and this is equation number 3. So minus 2x plus 2x cancels out each other. 3 minus 2 is y, 1y, and 9 minus 7 is 2. So y is equals to 2. Substituting y equals to 2 in equation, let's say equation 2. So we get 2y minus 2x is equals to 7. 2 in place of y I am going to write 2 minus 2x is equals to 7. 2 2 is 4 minus 2x is equals to 7. Minus 2x is equals to 7 and 4 goes on the other side, minus 4. Minus 2x is equals to 3. Now x is equals to 3 upon minus 2, that is x is equals to minus 3 by 2 or minus 1.5 in decimal. I hope it is
clear. In this situation x and y are interchanged, positions चेंज हो गई हैं, प्रोसीजर हमारा वही फॉलो होगा. वी हैव टू इंश्योर कि कोई एक वेरिएबल, अननोन वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए. ऑलराइट, लेट्स लुक इनटू द थर्ड सिचुएशन जो कि हमें मिल सकती है. नाउ दिस इज द थर्ड वेरिएशन. अब इसमें होता क्या है, हमारा माइंड इमीडिएटली हमें ये कहता है कि दिस इज -5y एंड दिस इज -4y. तो हमें क्या करना है, हमें इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है और इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है. सो हमारे ये इक्वल हो जाए 5 4 टाइम्स इज 20 एंड 4 5 टाइम्स इज 20. ये हमारा माइंड हमें इंस्टेंटली जो है बता देता है. बट यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना, एक ट्वीक है जो हमें अपने एंड से सॉल्व करनी है, एंड दैट इज, भाई वाई डू वी हैव टू एलिमिनेट वाई. ये तो कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना कि हमें ये y ही एलिमिनेट करना है. एज यू कैन सी दिस इज 9x एंड दिस इज 3x. इट इज मोर इजी कि अगर मैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस बिकम्स 3 3 इज 9, 9x 9x, और माइनस ताकि ये माइनस हो जाए, राइट. सो we get two equations that are 9x minus 5y is equals to 2. That is our equation number 1. And the other equation is plus minus minus 3 into 3, 9x, minus minus plus 4 3 is 12y is equals to minus minus, plus minus minus and 10 3 is 30. This is equation number 3. 9x minus 9x cancels out. 12 minus 5, that is 7 8 9, 7y is equals to minus 28. Now 7y is equals to minus 28, y is equals to minus 28 divided by 7, and y is equals to minus 7, 14, 21, 20 and minus 4. Y is equals to minus 4. Now substituting y equals to minus 4 in equation 1, 9x minus 5y is equals to 2. 9x minus 5, instead of y we are going to write minus 4 is equals to 2. 9x minus plus minus minus is plus, 5 4 is 20 is equals to 2. 9x is equals to 2 minus 20. 9x is equals to minus 18. x is equals to minus 18 divided by 9. 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा. x is equals to 9 1 is 9 and 2 is 18, minus 2. So remember, the task is, the aim is to eliminate one variable. अब ये भी कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई रूल नहीं है कि जी अगर y को ही, जो सेंटर वाली ये टर्म है, इसी को एलिमिनेट हर बार करना है. We can also eliminate this term. जो रूल है, जो हमारा, जो हमें, जो एक हमारा एम है, जो हमारा टारगेट है, दैट इज टू एलिमिनेट वन वेरिएबल. वो ये हो या ये हो, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. आई होप दिस वेरिएशन इज नाउ क्लियर टू यू. नाउ दिस इज अनदर सिचुएशन. इसमें क्या होता है, हमारा माइंड हमें यही फौरन गाइड करता है कि भाई दिस इज वेरिएबल 1, this is the unknown variable 2 and equals to के इस तरफ is supposed to be a constant, और ऐसा ही होना चाहिए. बट इन दिस केस हमें ऐसा तो नहीं करके दिया गया. ठीक है, हमारे लिए इक्वेशंस को उसने थोड़ा सा रीअरेंज किया है. सो हम अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से, कि हमें जिस तरीके के इक्वेशंस चाहिए, हम उस हिसाब से उसको रीअरेंज कर लेते हैं. दैट्स इट. फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. So I'm going to rearrange equation number 1 and I'm going to say 5x minus 3y is equals to, इस minus 13 को equals to के उधर लेके चले जाते हैं, that is 13. Similarly 7x minus 6y is equals to, this minus 20 goes on the other side and it becomes 20. This is equation number 2. See, rearrange करना है, simply हमने अपनी requirements के हिसाब से इन equations को, and that's it. Now प्रोसीजर फिर वही फॉलो होगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माइनस 3y एंड दिस इज माइनस 6y. अगर ये 6y हो जाए और प्लस का हो जाए, साइन भी चेंज हो जाए, तो हमारे 6y माइनस 6y एलिमिनेट हो जाएगा. सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विथ
2 because 3 2 is 6, बट उससे साइन नहीं चेंज होगा, सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद -2 ताकि पूरी इक्वेशन के साइंस भी चेंज हो जाए. नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स -10x, 5 2 times is 10 और साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 2 is 6y is equals to -13 2 is 26. साइन पॉजिटिव था तो माइनस हो गया. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3 एंड 7x minus 6y is equals to 20. This is our equation number 2 which is unchanged, जिसको हमने चेंज नहीं किया. Now plus 6y minus 6y cancels out, minus 3x is equals to minus 6. Now let's say minus 3x is equals to minus 6. So x is equals to minus 6 divided by minus 3, minus cancels out minus, x is equals to 3, 1 is 3 and 3 2 times is 6, x is equals to 2. Now I can substitute this x, value of x in equation number 1, 2 or 3, whichever equation I choose. So substituting x is equals to 2 in equation, let's say equation number 1. Just a minute. Sorry. Substituting x is equals to 2 in equation number 1. Equation number 1 is 5x minus 3y is equals to 13. Now 5x की जगह 2 minus 3y is equals to 13. 10 minus 3y is equals to 13. So minus 3y is equals to 13 और 10 उस तरफ जाएगा, minus 10. Minus 3y is equals to 3. Y is equals to 3 upon minus 3. Y is equals to minus plus minus minus 3 1s are 3, 3 1s are 3. So y is equals to minus 1. I hope this situation is now clear to you. हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इक्वेशन को रीअरेंज करना है एंड देन अपने एलिमिनेशन मेथड को एज इट इज फॉलो करना है. आई होप इट इज क्लियर. Now this is the last variation and perhaps the most difficult variation, जो कि लगता तो ऐसा ही है कि बहुत डिफिकल्ट है बट इट इज नॉट. थोड़ा सा एफर्ट लगती है इसमें, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट वंस अगेन दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 and this is our equation number 2. We have to rearrange this equation so that हमारे पास again variable 1 variable 2 equals to constant हो जाए. इस वक्त भी अगर आप देखें तो this is variable 1, this is variable 2 and this is a constant, but it is in fractions. Fractions में solve करना is a very difficult task. So हमने क्या करना है, हमने दोनों equations को separately पहले तो rearrange करना है हमारी requirements के हिसाब से. For example, rearranging equation 1, x upon 3 minus y upon 2 is equals to 5 upon 6. Now fractions को solve करने के ना there are multiple ways. ठीक है, मैं कुछ अपने ओन से जो मुझे easy लगते हैं मैं वही फॉलो करूंगा, राइट. आपको जो भी सूट करता है मेथड आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत से लोग y माइनस वाई अपॉन 2 को इधर लेके जाएंगे एंड देन दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 वहां ले जाके मल्टीप्लाई करके, उस तरह भी किया जा सकता है. बट आई एम गोइंग टू फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड एंड दैट इज बेस को सेम कर देते हैं. 3 2 is 6, 2 3 is 6. इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी गेट 2x अपॉन 6 माइनस 3y upon 6 is equals to 5 upon 6. Now in the next step 6 वहां जाएगा और ये 6 यहां पर आके मल्टीप्लाई होगा. 6 2x minus 3y is equals to 5. ये वाला 6 यहां आके मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 6 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा. सो 6 2 is 12x minus 6 3 is 18y is equals to 6 5 is 6 5 times is 30. So this is our equation number 1 and rearranged equation in the format that we want. Now
सिमिलरली हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को भी। थ्री एक्स माइनस 2/5y इज इक्वल टू, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, 5 3 is 15 प्लस 2 17/5। मिक्स नंबर से इसको फ्रैक्शन में लेकर आ गए। नाउ अब मैं इसको दूसरे स्टाइल से सॉल्व कर रहा हूँ। 17/5 मैं इस y वाली टर्म को इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेकर आ रहा हूँ, प्लस 2/5y। वाई? बिकॉज यहाँ पे माइनस था तो वहाँ जाके प्लस 2/5y हो गया। सो 3x इज इक्वल्स टू, बेस सेम है 5, 17 प्लस 2y। Now this 5 goes on the other side of the equals to sign and it multiplies with 3x. That makes it 5 3 times is 15x. चले स्टेप कर लेता हूँ so that you are not confused. (15x) is equals to 17 plus 2y. Now ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अरेंज नहीं है। अगर मैं y की टर्म को इधर लेकर आ जाऊँ इक्वल्स टू के, तो ये हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अरेंज हो जाएगी। दैट इज 15x minus 2y is equals to 17. This is our equation number 2. Now we have got two equations arranged in a form that we want. Now equation number 1 is 12x minus 18y is equals to 30. This is equation number 1. And 15x minus 2y is equals to 17, and this is equation number 2. Now अब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये इक्वेशन अरेंज हो गई हैं। सो मैं अब इन इक्वेशंस को हमारे एलिमिनेशन मेथड के फॉर्मेट पे सॉल्व करूंगा। सो आफ्टर रीअरेंजिंग दीज टू इक्वेशंस वी गॉट दीज टू इक्वेशंस। सिर्फ रीअरेंज हुआ है, इक्वेशंस चेंज नहीं हुई हैं, वी हैव जस्ट रीअरेंज देम। नाउ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। लेट्स से अगर मुझे 18y एंड 2y, मुझे अगर y को एलिमिनेट करना है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 with 9 so that 9 2 is 18. But even if I multiply it with 9, I'm going to get minus 18. So I have to multiply it with minus 9 so that minus भी change हो जाए प्लस हो जाए, so that 18y and minus 18y and plus 18y will cancel out. So I'm going to multiply this with minus 9. Equation number 1 remains the same, and equation number 2 changes. 15 multiplied with 9 is minus 135x. Now minus minus plus, 9 2 is 18y is equals to plus minus minus 17 into 9 is 153. This is equation number 3. Now minus 18y and plus 18y cancels out, minus 135 plus 112, that is minus 123. This is equals to minus 123, right? So 123x. Minus 123x is equals to minus 123, minus cancels out minus, x is equals to 123 upon 123. X is equals to 1. So we have got the value of x. Now we can substitute this value in any equation, 1, 2 or 3. Let's say substituting x is equals to 1 in equation number 2. Equation number 2. So we get 15x minus 2y is equals to 17. 15 x की जगह 1 minus 2y is equals to 17. X की जगह we have substituted 1, the value that we got for x. Now 15 minus 2y is equals to 17, and 15 goes on that side, minus 2y is equals to 17 minus 15, minus 2y is equals to 2. Minus 2y is equals to 2, so y is equals to 2 divided by minus 2, plus minus minus y is equals to, plus minus is minus 1. So y is equals to minus 1. See, this is the most complex variation
that we can get for elimination method. But all that you have to remember is equations को rearrange करें in the form that we require in this form and अपने substitute elimination method को as it is apply करें. जो हमने 6 scenarios study किए हैं उन्हीं में से कोई एक scenario apply होगा. Now I hope you are clear about all the variations that you can get about elimination method. I hope it is clear to you. Now let's talk about the second most popular method of solving simultaneous linear equation, and that is substitution method. In this method, procedure change hai, but the ultimate aim is the same. We have to find out the solution, and that is we have to find out the values of two unknowns, a, b, x, y, whatever two variables that are given in our linear equation, we have to find out the values. Now, elimination method में हम क्या करते थे? किसी एक variable को eliminate करते थे. In this substitution method, elimination नहीं होगी. A little bit different procedure will be followed. Now, let's see with this example what is the procedure of solving simultaneous linear equations using substitution method. Now, this is one of the easiest questions. Let's say this is our equation number 1 and this is our equation number 2. In substitution method, the first thing that we do is, number 1, we have to select any one equation. The first step is to select one equation. कोई भी हो सकती है, equation 1 भी select कर सकते हैं, equation 2 भी select कर सकते हैं. It is up to us. Let's say I am going to select equation number 2 and I am going to rearrange this equation. Rearranging equation 2. We can choose any one equation. We can choose equation 1 or we can choose equation 2. First step is choose the equation. I have chosen equation number 2 in this case. Now, after choosing the equation, we have to choose the unknown variable, either x or y. किसी एक को select करेंगे and we will make that variable the subject of the equation. This is step number 2. We have to select one variable, one unknown, and we have to make that subject of the equation. Subject of the equation का क्या मतलब होता है कि equals to के one hand पे, right hand पे या left hand पे सिर्फ वो variable होगा, वो unknown होगा, and on the other side of equals to बाकी सारी चीजें move कर दी जाएंगी. For example, x minus y is equals to 5. Now, I want to make x the subject of the equation. आप चाहें तो y को भी subject of the equation बना सकते हैं. In this case, in this scenario, I am choosing x. So, I am going to make x the subject of the equation, which means कि मैं y को equation equals to sign के दूसरी तरफ move करूंगा. x is equals to 5 minus y की जगह यहाँ पे आकर it becomes plus 5. Now, let's say this is equation number 3. इस equation को we call x in terms of y. x in terms of y. x को हमने लिखा है y की terms में. Step 1, choose any one equation. Step 2, choose the subject of that equation. किसी एक variable को either x or y उसको subject बनाएंगे, which means that particular subject will be on one side and rest of all the elements will be on the other side of equals to sign. Okay? Now, अब इससे हमें मिलता होता क्या है उसको देखें थोड़ा. What we are going to do is, हमने equation number 2 को rearrange किया था. So अब हमारे पास जो expression आया है that is 5 plus y. x की value नहीं आई है, x की एक हमारा expression आया है that is 5 plus y. We call it x in terms of y. So अब हमने करना क्या है? We have to substitute this 5 plus y in place of x in equation number 1 because हमने rearrange equation number 2 को किया था. So 5 plus y को हम equation number 1 में substitute करेंगे. x plus y is equal to 7. Now instead of x I am going to write 5 plus
y plus y as it is equals to 7. Now 5 plus 2y is equals to 7. 2y is equals to 7 minus 5 and y is equals to, this is 2 upon 2, y is equals to 1. Now look at this again. हमें इससे बेनिफिट क्या मिला है? इसको रीअरेंज करने से हमें बेनिफिट क्या मिला? हमें बेनिफिट ये मिला है कि जब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो x की जगह y आ गया, बिकॉज x वाज इन टर्म्स ऑफ y. सो यू सी, x की जगह जब y आ गया तो हमारा ऑटोमेटिकली x रिमूव हो गया. x जो है अब वहां एग्जिस्ट नहीं करता. और यही हमने स्टडी किया था. वी हैव टू हैव वन वेरिएबल, ईदर x और y. अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल्स होंगे तो हम इक्वेशन का आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते, हम अननोन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो हमने सब्स्टिट्यूशन करके इस केस में y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. नाउ दिस y, exactly the way we were doing it in elimination method, substituting y is equals to 1 in equation. हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो सब्स्टिट्यूट इट इन वैल्यू इन इक्वेशन 3. सजेस्टेड ये है कि आप इस इक्वेशन में करें क्योंकि आपको कुछ और रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही. यू ऑलरेडी हैव दिस इक्वेशन रीअरेंज इन फॉर्म ऑफ x. नाउ x is equals to 5 plus y. x is equals to 5 plus 1. x is equals to 6. See, equation in equation number 3. Equation 3 में सब्स्टिट्यूट करने से हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती. We directly get our answer. Now, if you choose equation number 1 और equation number 2, आप किसी एक equation में भी, इन दोनों में भी पुट कर सकते हैं. So, if you choose any of them, answer will be the same. Answer में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. You will get the end result, that is x is equals to 6. Now, I hope substitution method आपको clear है. What we have to do is, first we have to take any one equation and from that equation we have to choose one variable or unknown and we have to make that subject of the equation. Now we will get the expression like this one, 5 plus y. We can substitute this expression in the equation 1 or 2, whichever we did not choose. जो हमने choose की थी उसमें substitute नहीं करना, जो हमने choose नहीं की थी उसमें हमने substitute करना है. And we are going to get the value of y and then we can substitute this value in any equation 1, 2 or 3 and can get the value of x. I hope substitution method is now clear to you. The basics are at least clear. We will practice some more questions as well. Now let's take another example. Suppose this is our equation number 1 and this is our equation number 2. The first step is to select one equation from these two, right? हमें इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन सिलेक्ट करनी है. यहाँ पे ना एक चीज अपने माइंड में फिक्स कर लें, हमेशा उस इक्वेशन को चूज कीजिए in which the coefficient of either x or y is 1, which means जो वैल्यू है वो 1 है. लेट्स से इधर कोफिशिएंट 2 है, इधर कोफिशिएंट 3 है, इधर कोफिशिएंट 5 है, बट इन दिस केस इन इक्वेशन नंबर 1 कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, कोफिशिएंट इज 1. सो वो इक्वेशन चूज करें जिसमें किसी एक अननोन का कोफिशिएंट 1 हो, राइट? सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इक्वेशन नंबर 1 and I am going to rearrange it. X minus 2y is equals to 7. Now I have selected the equation. Now I am going to select the unknown, either x or y. Again, कौन सा unknown select करना है? With coefficient 1. इसका coefficient 1 है, इसका coefficient is 2. So I'm not going to select y, I'm going to select x. So x is equals to 7 plus
2y. x is equals to 7 plus 2y. Now, इसकी reason क्या है? देखें, whenever you are going to select any unknown with a coefficient greater than 1, so होगा क्या? Let's say for example 3, 10 minus 5y होता और divided by जाके 3 हो जाता, which will create a fraction. Fraction can create troubles. Fraction को solve करना problematic हो जाता है. But when we have a coefficient 1, यहाँ पे कोई fraction create ही नहीं होगा और जब fraction नहीं create होगा तो it will be easy for us to solve. Now, we have x in terms of y. Now what we are going to do is we are going to substitute this expression in equation number 2. Why? Because let's say this is equation number 3. We are going to substitute x is equal to 7 plus 2y, the expression s 7 plus 2y in equation number 2. Why? Because मैंने rearrange equation 1 को किया था. So हमने जिस equation को rearrange किया है, जिस equation को हमने select किया था, हमने उसमें ये expression substitute नहीं करना होता, otherwise we will not get the answer. We have to substitute it in the other equation, the one that we did not select. For example, in this case, 3x plus 5y is equal to 10. Now, in place of x, I am going to write 7 plus 2y. So 3 x की जगह आ गया 7 plus 2y plus 5y is equals to 10. Now, we'll apply the distributive law here. 7 3 times is 21 plus 3 2 is 6y plus 5y is equals to 10. Now, 21 plus 6 plus 5 is 11y is equals to 10. 11y is equals to 10. This 21 goes on the other side, becomes minus 21. 11y is equals to minus 11. Y is equals to minus 11 divided by 11. This 11 goes on the other side. 11 multiply by y हो रहा था, वहां जाके divide हो जाएगा. So we get y is equals to minus 1. Now we can substitute this y in equation 1, 2 or 3. It is our choice. But the best option is to substitute it in equation number 3. The equation is x is equals to 7 plus 2y. X is equals to 7 plus 2 and y की जगह आ गया minus 1. X is equals to 7 plus minus 2 1 times is 2. X is equals to 5. So y equals to minus 1, x is equals to 5. I hope this question is clear. What you have to remember is always choose the equation in which either x or y, कोई भी unknown x हो या y हो with coefficient 1, जिसकी coefficient की value 1 हो. If we have to select any equation, हमने select वो करनी है जिसकी coefficient की value 1 हो, if it is possible. अगर possible ही नहीं है, वो हम next scenario में third question हम जो try करेंगे उसमें मैं आपको सिखाऊंगा. But if it is possible, we have to select the equation in which either x or y has a coefficient 1. I hope it is clear. Now, let's see this example. Suppose this is our equation number 1 and this is our equation number 2. Again, the first step is to select one equation, either equation number 1 or equation number 2. It is our choice. हमारी मर्जी है हम कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं, हमें उस इक्वेशन को रीअरेंज करना होगा, राइट? नाउ लेट्स से in part 2, in the second example I told you, if we have any equation with any unknown x or y, variable x or y with coefficient, value of coefficient 1, हमें उस इक्वेशन को सेलेक्ट करना है. बट इन दिस केस कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है, कोफिशिएंट की वैल्यू 5 है. इन दिस इक्वेशन 4 and 3, किसी भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू 1 नहीं है. सो इन दिस केस वी कैन चूज एनी इक्वेशन. अब हमें फ्रैक्शन ही मिलेगा. नाउ लेट्स से आई चूज इक्वेशन नंबर 1 एंड आई विल मेक y the subject of the equation.
rearranging equation number 1. 2x plus 5y is equals to 12. Now, what I am going to do is I am going to select y as the subject of the equation, which means y equals to के एक side पे होगा, all the rest of the elements will go on the other side of equals to 1. So 5y is equals to 12 minus 2x, right? This 2x goes over there. Now y is equals to 12 minus 2x upon 5. This is y in terms of x. Y in terms of x, which means y is the subject of the equation. Now let's say this is equation number 3. Now I have to substitute this expression 12 minus 2x upon 5 in equation number 2, because मैंने rearrange equation 1 को किया है, so I cannot substitute this expression in equation 1. मुझे equation 2 में substitute करना पड़ेगा, the one that I did not select. So 4x plus 3y is equals to minus 4. Now 4x as it is plus 3. Instead of y, in place of y, 12 minus 2x upon 5. In place of y, we will write 12 minus 2x upon 5. The expression is equals to minus 4. Now 4x, we will apply distributive law here, plus 36 plus minus 3 2s are 6x अब यहां पर आके आपको वो बात क्लियर होगी कि हमें फ्रैक्शन क्यों नहीं चाहिए, राइट? सो नाउ वी हैव अ फ्रैक्शन. अब हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, इधर मैं इसके नीचे 1 प्लेस करूं और इसके भी, इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, which means इधर भी 5 आ जाए. I'll multiply it with 5. I'll multiply it with 5 as well. This will become 5 4 times is 20x upon 5 plus 36 minus 6x upon 5 is equals to minus 4. Now this becomes 5. 20x plus 36 minus 6x is equals to minus 4. This 5 goes over there and we get 20x minus 6x is 14x plus 36 is equals to 5 into minus 4. Now 14x plus 36 is equals to plus minus 5 4 times is 20. Now 14x is equals to minus 20 minus 36. This 36 goes over there. 14x is equals to minus 56 and x is equals to minus 56 upon 14. X is equals to minus 4. The value of x is minus 4. Now we can substitute this value of x in equation 3, that is y is equals to minus is plus 2 4 times is 8 upon 5. This will give us y is equals to 20 upon 5. Y is equals to 5. 1 times is 5, 4 times is 20. Y is equals to 4. So the solution to this equation is x is equals to minus 4 and y is equals to 4. See, this is why we have to always select, at least try our best, if possible, select the value, the equation with either x or y having coefficient 1. Okay? Otherwise we will get a fraction, and fraction can be a little tricky to solve when we are using substitution method to solve simultaneous linear equation. The second way of solving this will be, मैं सबसे पहले 4x को
वहाँ मूव कर देता हूँ, इक्वल्स टू के दूसरे एंड पे मूव कर देता हूँ. I get 36 minus 6x upon 5 is equals to minus 4 and minus 4x. This 4x goes over there and it becomes minus 4x. Now, this 5 goes on the other side and multiplies with both of them. 36 minus 6x is equals to 5 minus 4 minus 4x. That is 36 minus 6x is equals to distributive law, plus minus, minus 5 4 times is 20, plus minus, minus 5 4 times is 20x. Now, minus 6x plus 20x, x वाली टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं, इक्वल्स टू माइनस 20 माइनस 36. कॉन्स्टेंट्स को हम इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं. सो दिस बिकम्स 14x is equals to minus 56, x is equals to minus 56 upon 14, x is equals to minus 4, and substituting x is equals to minus 4 in equation 3, y is equals to 12 minus 2x upon 5, y is equals to 12 minus 2 minus 4 upon 5, y is equals to 12 minus minus plus 2 4 times is 8 upon 5, y is equals to 20 upon 5, that is equals to y is equals to 5 1 times is 5, 5 4 times is 24. I hope now you are clear about substitution method, and now you are clear how to solve substitution method, how to solve simultaneous linear equations using substitution method. Now let's talk about the third method, and that is graphical method. Now this method is a very lengthy method, so students will always prefer elimination and substitution method over this method. But for the sake of understanding and knowledge, we are going to solve one question regarding a graphical method. Now suppose this is our equation number 1, as this is equation of a straight line and this is also equation of a straight line. So on a Cartesian plane we are going to get a straight line. Now I am going to rearrange equation number 1. This 3x goes over there, we get y is equals to minus 3x plus 5. This is our rearranged equation. Now I am going to rearrange equation number 2 as well. So y is equals to x goes over there, minus x plus 3. So we have our rearranged equation number 1 and equation number 2. अब हमने प्रोसीजर वही फॉलो करना है, एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना है और उस इक्वेशन के x की वैल्यूज हमने पुट करनी है एंड वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ y. वही प्रोसीजर जो हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स ड्रॉ करते वक्त फॉलो की थी, वही सेम स्ट्रैटेजी हमारी फॉलो होगी. सो let's say this is equation number 1, y is equals to minus 3x plus 5. I'm going to draw a table x and y. I have to choose minimum 2 values and maximum मैं कितनी भी choose कर सकता हूँ, but to get a straight line we at least need 2 values. So मैं यहाँ पे minus 2, 0 and 2. I'm going to select these 3 values so that I can get 3 points on a Cartesian plane. Now y is equals to minus 3, in x की जगह मैं minus 2 substitute करता हूँ, then plus 5. y is equals to minus minus plus 3 2 is 6 plus 5, y is equals to 11. So this is 11. Now our value number 2 will be y is equals to minus 3, x की जगह 0 plus 5, y is equals to 0 plus 5 and y is equals to
5. This is our value 2. First value, second value of y, 5. And the third is y is equals to minus 3. X की जगह I am going to put 2 plus 5. Y is equals to minus 3, 2 is 6 plus 5 and y is equals to minus 1. X की 3 वैल्यूज हमने खुद सेलेक्ट करनी है बिकॉज x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. 3 वैल्यूज हमने सेलेक्ट की, हमने उसको इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया एंड वी गेट आर वैल्यूज ऑफ y. नाउ सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड फॉर इक्वेशन नंबर 2. So our equation is y is equals to minus x plus 3. Y is equals to, I'm going to draw a table first. And I'll choose minus 2, 0 and 2 for x. Now the first value will be y is equals to minus, instead of x, minus 2 plus 3. So y is equals to minus plus 2 plus 3, y is equals to 5. Y is equals to minus 0 plus 3, y is equals to 0 plus 3 is 3. The second value of y is 3. And similarly y is equals to minus, x की जगह पर अब 2 पुट करेंगे, 2 plus 3. So y is equals to, minus plus is minus 2 plus 3, y is equals to minus 1. So we have substituted the values of x in equation number 1 and we have got our values of y is 11, 5 and minus 1. Similarly, we have substituted the value of x in equation number 2 and we have got our 3 values, 5, 3 and minus 1. Now we are going to plot these values on our Cartesian plane on a graph, on a 1 by 1 centimeter, 1 centimeter by 1 centimeter graph. On the same Cartesian plane, we are going to plot this graph as well, and we will see where these two graphs will cross each other, cut each other or intersect with each other. So now we have already completed all the calculations and we have got our two tables for equation number 1 and equation number 2. Now first things first, सबसे पहले तो एक correction कर लीजिए. Equation number 2, y is equals to minus x plus 3 में when we put the value of x2, we got the value x equals y is equals to minus 1, but it was not actually minus 1, it was plus 1. That was a human error, so आप उसको correct कर सकते हैं. The value was plus 1, not minus 1. So now let's draw the graph of these two lines on a Cartesian plane, 1 by 1 centimeter graph, that is a regular graph given to us in our papers. Now what I have done here is that I have chosen 2 units, 2 boxes, 2 centimeter to represent 1 unit on x axis, because मेरी x की values जो है वो -2 से 2 तक हैं. So अगर मैं 1 box for 1 unit select करता हूँ तो ये तो यहीं पे, यहाँ से लेकर यहीं तक खत्म हो जाएगा, right? As a general कोई रूल नहीं है, बट एज अ जनरल रूल मैं इसको कह सकता हूँ, वी फॉलो द स्ट्रेटेजी दैट इज कवर 75% ऑफ योर ग्राफ. ठीक है, सो दिस इज 1, 2, 3 and we can mark the arrow and this is x axis. Similarly on the negative x axis, -1, -2, -3 and this is. Now on the y-axis I'm going to select the scale 1 box to represent 1 unit or 1 centimeter to represent 1 unit, because मेरी y की maximum value 11 आ रही है यहाँ पे and minimum value इन दोनों में -1 आ रही है, right? So
मुझे नेगेटिव वाई एक्सिस की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है. सो आई एम गोइंग टू इंश्योर कि मेरा मैक्सिमम ग्राफ जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में रहे. सो one box to represent one unit, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and this is now required तो हमें 11 तक ही था, but मैं 1-2 units आगे ले जाता हूँ because it will give a good effect to our graph. Similarly, -1, -2, this is -3, and I'll remove the excess line. Once again, -1 तक required था, but I have taken it to -3 so that it will give us a good effect on our graph. Now, let's start plotting the points. x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू है 11. x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू is 11. There it is. 2 units on x-axis and then 11 units upwards as it is positive 11. Now 0 पे 5 upwards, 2 पे -1 downwards. So we have received our first line. Let's connect the points. Now remember this thing. मैंने यहाँ पे पॉइंट्स जो मार्क किए हैं उनको मैंने बहुत ज़्यादा डार्क किया है बिकॉज हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं. दैट्स वाई आपने इंश्योर करना है कि आपकी ये लाइन जो है, ये पॉइंट्स जो हैं, ये बहुत नॉमिनल नज़र आने चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं नज़र आने चाहिए जिस तरह मेरे नज़र आ रहे हैं. ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैंने इतने डार्क पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं. नाउ एज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन वी कैन ऑल्सो एक्सटेंड दिस. सो मैं थोड़ा सा इसको दोनों साइड्स पर एक्सटेंड कर देता हूँ. Now, let's draw the graph of second equation. -2 पे 5, -2 पे we get 5, 0 पे 3, 0 पे 1, 2, 3 upwards, and 2 पे 1 upwards, 2 पे 1 upwards. Now, let's join these dots, these points, and we will get our second line. This is our straight line of equation number 2, and I'm going to extend it a little. Because it is a straight line, it can be extended. Now, this is the point with the two lines, number 1 and number 2. Line number 1, line from equation number 1 and line from equation number 2. These are intersecting or they meet each other or they are crossing each other. So the value of x at this point is, the coordinate x is 1 and the y coordinate is 2. So the value of x in this graph, in this question, is x is equals to 1 and y is equals to 2. This is the point where the two lines meet or cross each other or intersect with each other. This is the solution. X is equals to 1 and y is equals to 2. I hope this graph is now clear to you, and this is what we call graphical method. We have to draw the lines of both the equations, and wherever they are crossing each other, that is our solution. I hope it is clear. Now let's talk about applications of simultaneous linear equations. Simultaneous linear equations कहाँ यूज होती हैं, किस तरह यूज होती हैं, और हमें स्टेटमेंट्स को यूज करके किस तरह एग्जीक्यूट करना होता है simultaneous linear equations को. We'll study them using some questions. मैंने कुछ questions select किए हैं, so we are going to practice them one by one. Let's see this question. Sum of two numbers is 80. There are two numbers and when added together they are going to give us 80, right? So first of all we'll make the data. Let the first number
equals x, let the second number equals y. So आपकी चॉइस है, आप a और b भी एज अननोन्स यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो p q भी यूज कर सकते हैं. You can use any two alphabets to represent two unknowns. Okay, I'm going to choose x and y. I have chosen x and y. Basically, sum of two numbers is 80. So the first statement is x plus y is equals to 80. Sum of two numbers is 80. Their difference is 16. How do we calculate the difference? जब भी हमें कोई two numbers दिए हुए हों और उनका difference check करना है, suppose we have 20 and 10. तो उसका डिफरेंस कैसे मिलता है? हम 20 में से 10 को माइनस कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि 20 एंड 10 के बीच में 10 का डिफरेंस है, राइट? सो x minus y is equals to 16. This is our second equation. Now these are simultaneous linear equation. This is equation number 1. This is equation number 2. We are going to solve them using elimination method. इस क्वेश्चन के लिए मैं elimination method यूज करूंगा. y will cancel out y because plus y will cancel out minus y. 2x is equals to 96. Now 2x is equals to 96. X is equals to 96 divided by 2. X is equal to 1 times is 2, 4 times is 8, 8 times is 16, 48. So x is equals to 48. This is our first number. The first number is 48. So I'm going to put this x in equation number 1 to get the answer of y. Substituting x is equals to 48 in equation 1. X plus y is equals to 80. So in place of x, I'm now going to substitute 48. 48 plus y is equals to 80. Y is equals to 80 minus 48. This 48 goes on the other side. Y is equals to 50, 32. So the second number is 32. These are the two numbers. When added together, they will give us 80. 48 plus 32 is 80 and their difference is 16. 48 minus 32 is 16. So we can use simultaneous linear equations if we have two statements and we have to find out the missing numbers. Simultaneous linear equation can be used for that. I hope it is clear. Similar to the last question, in this question once again we have to find out the values of the two missing numbers. So we are going to use this statement, we are going to form our two equations and using those two equations we are going to find out the values of those numbers. Now let's see. Sum of two numbers is 65. When added together the two unknown numbers will give us 65. The smaller number is 1/4 of the greater number. जो smaller number है वो greater का 1/4 है, which means अगर greater number 40 है तो उसका smaller number is 10. 1/4 divided by 4 है, right? अगर वो 20 है तो smaller number is 5, 1/4. But what are those two numbers? Let's see. Let the smaller number equals x and let the greater number equals y. So आप कोई और भी alphabets choose कर सकते हैं. Now the first equation is sum of two numbers is 65. X plus y is equals to 65. This is our first equation. The smaller number is 1/4 of the greater number. X जो है वो y divided by 4 है, 1/4 of ग्रेटर नंबर. अब y अगर ग्रेटर नंबर है तो उसका स्मॉलर नंबर कैसे मिलेगा? डिवाइडेड बाय 4, राइट? सो y अपॉन 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. Now which method should I use to solve these two linear equations? Obviously substitution method. Why?
हमने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टडी किया था, हमने क्या वहां पे स्टडी किया था? हमने ये स्टडी किया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक इक्वेशन को चूज करते हैं और उसको ऐसे रीअरेंज करते हैं कि उसका एक वेरिएबल इन इक्वल्स टू के एक तरफ हो और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल्स टू के दूसरी तरफ हो, और हम उसको कहते थे वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, लाइक दिस x is equals to y upon 4, x in terms of y upon y, x in terms of y. So यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 2, x का जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है y upon 4, वही हम पूरा का पूरा यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो x plus y is equals to 65. Now x की जगह मैं एक्सप्रेशन जो हमें मिला है y upon 4, x किसके बराबर है? y upon 4 के। मैं इसी एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। y upon 4 plus y is equals to 65. Now I have got two methods. मैं इसके नीचे 1 पुट करूं और इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं, विच इज इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूं। और दूसरा मेथड जो मेरे पास है, जिसको मैं यूज करना चाहता हूं, दैट इज फॉर अ मोमेंट मैं y को उस तरफ ले जाता हूं, y अपॉन 4 इधर ही रहा, 65 माइनस y, दिस 4 गोज ओवर देयर, y इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड विद 65 एंड y बोथ। इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, 60, 120, 180, 240 प्लस 20, 260 minus 4y. Now this 4y goes on the other side again, y plus 4y, because it is minus 4y here, on the other side it will become plus 4y is equals to 260. So 5y is equals to 260. Now y is equals to 260 divided by 4, divided by 5, sorry. This 5 goes on the other side, इधर ये multiply हो रहा है y से, when goes on the other side it will divide. 5 1 5, 5 5 times is 25 and 5 2 times is 10. So y is equals to 52. The value of y is 52. Now I can substitute this value y in any equation, equation 1 and equation 2, but easy approach क्या है, equation 2 में put करें ताकि direct answer मिले। Therefore x is equals to y upon 4, x is equals to 52 divided by 4, x is equals to 4 1 times is 4, 1 times is 4, 4 3 times is 12, x is equals to 13. So these are the two numbers, 52 and 1/4 of it, that is 13. So whenever we have two missing numbers, we can, and we have statements also, we can use those statements to create our equations and solve these equations using our methods, our techniques, elimination or substitution, and find out the answer of those missing values, those missing numbers. I hope it is clear to you. So another very important application where we use simultaneous linear equation is 2 kg of oranges and 1 kg of apples cost 460 rupees. 2 kg apples and 1 kg oranges cost 460 rupees. 1 kg oranges and 1 kg of apples cost 300 rupees. 1 kg apples and 1 kg orange will cost 300 rupees. We have to find out the cost of 1 kg each. Now, if we see the second statement, 1 kg of orange and 1 kg of apples cost 300. अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर 1 kg एप्पल और 1 kg ऑरेंज 300 रुपीज का है, मे बी पॉसिबल 1 kg ऑरेंज 150 है और 1 kg ऑफ एप्पल्स इज आल्सो 150, सो 150 विल मेक 300। बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक 120 रुपीज केजी हो और एक 180 रुपीज केजी हो, उस सिचुएशन में भी तो 300 ही बनता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक 100 रुपीज केजी हो और एक 200 रुपीज केजी हो, इन दैट केस also we are getting 300 rupees. So which is the actual value and what is the actual value of 1 kg apples and 1 kg oranges? Now let's see. Let's make the data first. Let the cost of 1 kg apple equals 1 kg oranges, x
and let the cost of 1 kg apples is equals to y. ठीक है, हमने क्या कहा, हमने 1 kg एप्पल को x कह दिया बिकॉज हमें तो नहीं पता क्या वैल्यू, सो अननोन x, एंड 1 kg ऑफ ऑरेंजेस को भी हमने 1 kg ऑफ ऑरेंज को x कह दिया एंड 1 kg एप्पल को हमने y कह दिया. अब यूजिंग दीज x and y we are going to create our two equations. So equation number 1 is 2 kg of oranges. If 1 kg is x, then 2 kg is 2x, and 1 kg of apple, 1 kg of apple is y. So 2x plus y is equals to 460. What does this tell us? 2 kg of oranges plus 1 kg of apple will cost us 460 rupees. Similarly, 1 kg orange, x, simply 1 kg orange, and 1 kg apple will cost us 300 rupees. So these are the two equations that we have. This is equation number 1 and this is equation number 2. We can use substitution or elimination to find out the values of x and y. I am going to choose elimination method in this case. So in elimination हमें कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है. एज वी कैन सी दिस इज प्लस वाई एंड दिस इज प्लस वाई. इनमें से कोई भी एक अगर माइनस वाई बन जाए सो वाई एलिमिनेट हो जाएगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विद -1. व्हाट विल दिस गिव अस? सेम एज 2x plus y is equals to 460. इक्वेशन नंबर 1 विल रिमेन सेम. इक्वेशन नंबर 2 जिसमें हमें -1 से सबको मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर सारे के सारे वेरिएबल्स, सारी की सारी वैल्यूज अपना साइन चेंज कर देती हैं और 1 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू चेंज नहीं होती. सिनेरियो नंबर 2. This is our equation number 3, the rearranged equation. So what do we get? Plus y minus y will cancel out each other. This will 2x minus 1x is x is equals to 160. So x is equals to 160 rupees. ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ गया. सो द वैल्यू, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंज इज x, और x की वैल्यू कितनी है? 160 रुपीज. सो 1 kg ऑरेंज की वैल्यू है 60 रुपीज. सब्सटीट्यूटिंग x is equals to 160 in equation, I can choose any equation. I am going to choose equation number 2. हम किसी भी इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. x plus y is equals to 300. So x is equals to 160 plus y is equals to 300. Y is equals to 300. 160 goes on the other side, it becomes minus 160. Y is equals to 140 rupees. 160 rupees is the cost of 1 kg orange and 140 rupees is the cost of 1 kg apples. Now in this example we were doing apples and oranges. आपके पास इस तरह के बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं और कोई भी दो आर्टिकल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल शूज एंड स्लीपर्स, इस तरह की कोई एग्जाम्पल आ जाए. बेल्ट एंड वॉलेट, इस तरह की कोई एग्जाम्पल आ जाए. कोई भी इक्वेशन हो, किसी तरह की भी सिनेरियो, आपको कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी दो आइटम्स या आर्टिकल्स के आपके पास वैल्यूज हो और आपसे पूछा जाए कि इनके वैल्यूज बताएं. फॉर एग्जांपल आपको कहता है 5 belts and 4 wallets will cost similarly 3 belts and 2 wallets. आपके पास दो इक्वेशंस आ गई. राइट डाउन योर 2 इक्वेशंस, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करके उनको सॉल्व करें और 1 बेल्ट और 1 वॉलेट की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू. Now, let's take another application. A family of 3 children and 2 adults have to pay 12,000 rupees to enter a park. In order to enter a park, a family of 3 children and 2 adults will have to pay 12,000 rupees. But a family of 5 children and 3 adults, another family that has 5 children and 3 adults will have to pay 19,000 rupees. What we have to do is find the ticket cost of a single child. One child की क्या cost है, ticket cost क्या है, and one adult की क्या ticket cost है, we have to find out. So again, let's make the data first.
let the ticket cost of child equals X and let the ticket cost of adult equals Y. Again, I am using X and Y. You can choose any two alphabets, A, B, P, Q, U, V, any of them. Now, using these X and Y, we are going to create two equations. A family of 3 children. One children is X, so 3 children will be 3X plus 2Y, 2 adults, single adult is Y, so 2 adults will be 2Y is equals to 12,000. Similarly, 5 children, that is 5X and 3 adults plus 3Y is equals to 19,000. Now I have to find out the value of X and Y using elimination method. Let's say this is our equation number 1 and this is our equation number 2. Now I have to eliminate either X or Y. I'll choose Y. So इस Y को eliminate करने के लिए सबसे पहले तो मुझे देखना ये कि 2 है and this is 3. So I'm going to multiply this one with 3 and this one with 2. This equation with 2, equation number 2 with 2 इस वाली वैल्यू से and equation number 1 को इस वाली वैल्यू से. Scenario number 6 है ये, if you remember. Now even if I multiply it with 2, I will get 5 2s are 10x and 3 2s are 6x. Again here 3 3s are 9x and 3 2s are 6x. This will be plus 6y, this will be plus 6y. Eliminate तो होगा ही नहीं. Plus 6y will become plus 12y. So I need to make sure कि इनमें से कोई एक माइनस में हो. So what I'm going to do is I'm going to put minus here as well. किसी एक इक्वेशन को 1 को या 2 को माइनस से भी मल्टीप्लाई करें, सो उससे क्या होगा, सारी की सारी वैल्यूज चेंज होंगी 3 की वजह से, बट माइनस की वजह से सारे के सारे साइंस भी चेंज हो जाएंगे. सो इक्वेशन 1 विल बिकम प्लस माइनस माइनस 3 3 is 9x plus minus minus 3 2 is 6y is equals to plus minus minus 12 24 36,000. And this equation will become plus 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 5 2 is 10x plus 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 3 2 is 6y is equals to plus 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 19,000 into 2 19 19 38,000. So you see minus 6y will cancel out plus 6y. 10x में से 9x minus कर लें तो we get x is equal to 38,000 minus 36,000 is 2,000. X is equals to 2,000 rupees. That is, X was the ticket cost of a child. So the ticket cost of a child is 2,000 rupees. Now we can substitute this value in any equation 1, 2, or this was equation number 3 and this was equation number 4, in any of these equations, and we will get the value of y. So substituting x is equals to 2,000 in equation, I'll choose equation number 1 because it looks easier. 3x plus 2y is equals to 12,000. So 3 x की जगह we will write 2,000 plus 2y is equals to 12,000. Now 3 2 is 6,000 plus 2y is equals to 12,000. This 6,000 goes on the other side of equals to 2y is equals to 12,000 minus 6,000. So 2y is equals to 6,000 plus 6,000 था equals to के दूसरे एंड पे जाएगा, दूसरे हैंड पे जाएगा, it will become minus 6,000. 12,000 में से 6,000 माइनस किया, we get 6,000. Now y is equals to 6,000 divided by 2. इस 2 को जो कि y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, when I shift on the other side of the equals to sign, it becomes divided by 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6. So y is equals to 3,000 rupees. What was y? Y was the cost of adult, ticket cost of an adult. So
ticket cost of a small child or a child is 2000 rupees and ticket cost of an adult is 3000 rupees. I hope this example, this application is clear to you. Another very important application of simultaneous linear equations is when you have to find out the missing measurements of figures, geometric figures, triangle, square, rhombus and other figures. Now, the important thing is all of these measurements like area, parameter or volume, all of these are related to the length, breadth and height and all these measurements of that particular figure. So it is very important that we should know how to use simultaneous linear equations to find out missing lengths of geometric figures. Now, let's consider this example. The figure shows an equilateral triangle with the following lengths. This is an equilateral triangle with the following length: 2x minus 7, y plus 5, x plus y minus 9. Now, values नहीं है lengths की, expressions हैं, right? So, 2x minus 7 इसकी length है, x plus y minus 9 and y minus 9 and y plus 5. We have three expressions for three lengths. But यहाँ पे एक चीज समझना की जरूरी है. Figure shows an equilateral triangle, which means all of these lengths, these three lengths are equal. That is why it is an equilateral triangle. ना? So, any two lengths, अगर मैं कहूँ ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो मैं कह सकता हूँ ना 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. मैं इन दोनों लेंथ्स को भी इक्वल रख सकता हूँ, 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. बट राइट नाउ मुझे वो वैल्यू नहीं पता, बट मुझे उसके एक्सप्रेशंस गिवन है. सो मैं कोई भी दो लेंथ्स को इक्वल रखूंगा तो वो इक्वल ही है ना. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट टू इक्वेशंस. लेट्स से मैं इन दोनों इक्वेशंस को पहले इक्वल रखता हूं. 2x minus 7 is equals to x plus y minus 9. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन जिसमें मैं कहता हूं ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ऑटोमेटिकली इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट? मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं. x को इधर ले आते हैं, दिस बिकम्स माइनस एक्स. y को भी इधर ले आते हैं, दिस बिकम्स माइनस वाई. एंड यहां है माइनस 9 और इस 7 को उधर ले जाते हैं, दिस बिकम्स प्लस 7. देखें, प्लस एक्स जब इक्वल्स टू के इस तरफ आता है तो माइनस एक्स हो गया, प्लस वाई अगेन माइनस वाई हो गया. सिमिलरली माइनस 7 जब इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे मूव करता है इट बिकम्स प्लस 7. सो दिस इज 2x माइनस एक्स इज x. 2 में से 1x माइनस करते हैं तो x बचता है. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7 माइनस 9 दैट इज माइनस 2. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, जिस फॉर्म में हमें इक्वेशन चाहिए उस फॉर्म में हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई ना. मैं अब इन दोनों लेंथ्स को भी इक्वल रख लेता हूं क्योंकि मैं इन दोनों लेंथ्स को रख सकता हूं बिकॉज दे आर इक्वल, दे आर इक्विलेटरल ट्राइंगल. दीज टू लेंथ्स आर आल्सो इक्वल. सो आई कैन से 2x minus 7 is equals to y plus 5. Again, y को इस तरफ मूव कर देते हैं, we get 2x minus y is equals to 7 को उस तरफ मूव कर देते हैं, 5 plus 7. So 2x minus y is equals to 12. This is our equation number 2. Equation number 1, equation number 2. Similarly, मैं इन दोनों लेंथ्स को भी इक्वल रख के एक इक्वेशन बना सकता हूं. बट फॉर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बिकॉज टू वेरिएबल्स हैं तो हमें टू अननोन्स के लिए टू ही इक्वेशंस चाहिए हैं, तो हम उनको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे. सो आई हैव इक्वेशन नंबर 1, आई हैव इक्वेशन नंबर 2. x minus y is equals to minus 2. 2x minus y is equals to 12. This is equation number 1. This is equation number 2. Again, देखें, माइनस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट नहीं हो सकते. किसी एक को तो प्लस में जाना पड़ेगा और किसी एक को प्लस में ले जाने के लिए मुझे किसी इक्वेशन को, एक पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय -1 करना पड़ेगा. -1 क्यों? माइनस विल चेंज ऑल द साइंस बट 1 विल मेक श्योर द कोफिशिएंट्स आर सेम. ये 2 है तो ये 2 ही रहे, ये 12 है तो ये 12 ही रहे, राइट? सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विथ -1. Now the equations are x minus y is equals to minus 2 and this equation will become minus 2x. I'll write it down again. X minus y is equals to minus 2. This is our first equation. This equation will become minus 2x plus y is equals to minus 12. See, 2x
y 12, but the signs are changed. प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया. Now y will cancel out y, we get minus x is equals to minus 14. Minus cancels out minus, we get x is equals to 14. Value of x is 14. Now we have got the value of x. We will substitute this value in any equation. This one, equation number 1, equation number 2, or equation number 3, which was this one, and we will get the value of y. ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 1 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y. सो सब्स्टिट्यूटिंग I'll substitute it in equation number 1. So I get x minus y is equals to minus 2. X is 14 minus y is equals to minus 2. So minus y is equals to minus 2 minus 14. This 14 goes on the other side and it becomes minus 14. Minus y is equals to minus 16. Minus 2 and minus 14 is minus 16. Minus cancels out minus. Y is equals to 16. Now we have two values, x is equals to 14 and y is equals to 16, but these are not the lengths. ये lengths नहीं है, ये remember, you need to remember this thing, ये याद रखें, these are not lengths. We have to find out the length now. So let's say this equation x plus y minus 9. x की जगह x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 14. y की जगह y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 16 माइनस 9. 14 प्लस 16 इज 30. 30 माइनस 9 इज, so this is 21 मीटर, राइट. सिमिलरली हम इस इक्वेशन में भी पुट करके देख लेते हैं कि हमारा वैल्यू 19 ही 21 ही आती है या नहीं. 2x माइनस 7, x की जगह पे we will put 14 minus 7. 14 into 2 is 28 minus 7, that is 21. This is also 21 मीटर. अब आप y की वैल्यू डायरेक्ट इधर भी पुट अगर कर लें तो आंसर वही आएगा. लेट्स से y plus 5, y की वैल्यू क्या है, 16. So 16 plus 5 is 21. This is also 21 मीटर. So अगर कोई एक भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते ना, दैट वॉज सफिशिएंट, बिकॉज हमें तो एक ही वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू आ जाएगी तो बाकी सारी वही हैं, बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. अगर ये 21 है तो ये दोनों भी 21 ही होंगी, राइट. बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एंड टू इंश्योर कि हमारा आंसर सही है, हमने तीनों में इसको पुट करके देख लिया और तीनों में हमारा आंसर आ रहा है 21 मीटर. ईच लेंथ इज 21 मीटर इन दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल. आई होप it is clear now. So this was all about simultaneous linear equations. Now I hope you know what are simultaneous linear equations, you know what is solution to simultaneous linear equation, and you know how to solve simultaneous linear equations using elimination, substitution and graphical method. Now challenge yourself, open your books and your past papers and see if you are able to solve the questions from your books and your past papers. We'll meet you with another topic in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.